आपसे नहीं सुन रहा, मेरे को दिक्कत बात हो जाएगा।
हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. So we are learning cockroach. Introduction is what? The cockroaches are black or brown bodied animals. They are omnipresent. That is, they are present everywhere. They are mostly present in moist and damp places. They belongs to class Insecta, phylum Arthropoda, kingdom Animalia. You have to some note some interesting points. Some bright yellow, green, and red colored cockroaches have also been reported in tropical region. The general size of cockroaches is 1 by 4 to 3 inches, that is 0.25 to 3 inches. And in centimeters, it is 0.6 to 7.6 centimeters. Always remember that the exoskeleton of the cockroaches is chitinous. It has long antenna, wings, legs, and upper flat body that wall that conceals head. ये बहुत important point है. Since they have become residents of human homes, they are caused to be what serious pests and vectors for several vector-borne diseases. The most common species of cockroach found in the world is what? It is Periplaneta americana. I'm going to study 2 points regarding this: morphology and anatomy. Talking about the size of Periplaneta americana is 34 to 53 millimeters. It has wings that extends beyond the tip of the abdomen in males. This feature is present only in males. The body of the cockroaches is covered by what? Hardened chitinous plates called as sclerites. The sclerites dorsally called as tergites, ventrally called as termites, and laterally called as pleuroids. And we know all these plates are held together with the help of thin and flexible arthrodial membrane. Body divisions are what? The body is divided into three parts: head, thorax, and abdomen. Head has how many segments? Six in the embryonic stage. The six segments fuse to form one segment of head in the adult. Thorax has three segments, and abdomen has 10 segments. So total there has 14 segments. Hence, this shows metameric segmentation. Talking about the head in the head, six segments fuse to form one segment. Shape of the head is triangular. Head is attached by thorax by short extension. यहाँ पे एक correction करें everybody. This is prothorax. This is an extension of prothorax, which act as what? Neck. It is flexible and can move in any direction. Their head lies anteriorly perpendicular to what? Longitudinal body axis. The head capsule bears what? The head capsule bears a pair of antennae. Function is to monitor the environment. They have a pair of simple eyes called as ocellus, which is vestigial. They have a pair of compound eyes. Each compound eye is made up of 2000 hexagonal units called as omatidia, which produces several images of an object called as mosaic image. They also produce nocturnal vision. That is, they has less resolution and high sensitivity. What are the mouth parts? The mouth parts of cockroaches are what? They are of biting and chewing type. Upper jaw is known as maxilla, upper lip known as labrum, tongue known as hypopharynx, lower jaw mandible, lower lip labium, right? You always remember that the maxilla shows some sensory pal and labium also shows some sensory pal. Hence, labium is also known as what? Secondary maxilla. Talking about the thorax, it has three segments: prothorax, mesothorax, metathorax. The covering of prothorax is known as pronotum. Thorax shows two pairs of wings, three pairs of legs, each pair arising from each segment. Their forewings arises from mesothorax and hindwings arises from metathorax. Forewings are also known as stegmina or elytra. Their forewings are what? Larger, thick, leathery, opaque. Function is to protect hindwings when at rest. Hindwings are smaller, thin, membranous, transparent, and are used for flight. Each pair of leg arises from each segment, and the segments of this legs are also segmented. They are what? Coxa, trochanter, tibia, five tarsus, claws, and claws has what? Adhesive pad. Talking about the abdomen, so abdomen has 10 segments, and they show sexual dimorphism. What do you mean by sexual dimorphism?
The male cockroaches can be distinguished from the female cockroaches by having what? A pair of anal style arises from the ninth segment present only in males. And a pair of some structure which is known as anal cerci arises from the 10th segment in both males and females. And it has sensory function. You have to know genital pouch. Genital pouch in females, also known as brood pouch, is made up of 7th, 8th, and 9th sternal segment. Always remember 7th sternal segment is boat shaped. It anteriorly shows what? Three things. A pair of spermatheca, female gonopore, and a pair of collateral gland. In males, it is made up of 9th and 10th terga, and ventrally it is made up of 9 sterna. The dorsally it shows anus, and anteriorly it shows what? Male gonopore, that is genital pore, anal style, and gonapophysis. Talking about the anatomy, body of cockroach accommodate various systems like digestive, respiratory, excretory, circulatory, control and coordination, reproductive system. Talking about the digestive system, it consists of what? Alimentary canal and associated glands. Their alimentary canal or gut is divided into three parts: foregut, midgut, hindgut. Foregut starts from mouth, ends with anus, gizzard. Midgut, also known as mesenteron, and hindgut is divided into three parts: ileum, colon, and rectum. Their mouth food is ingested with the mouth, leads to short tubular pharynx, and in pharynx, two pairs of salivary gland arises, which produces saliva, and the saliva has salivary amylase, which digests what? Starch. This saliva is stored in the salivary reservoir. A pair of salivary reservoir they present. Pharynx leads to narrow passage, which is known as esophagus. Esophagus leads to crop. Crop is a like stomach, storage of food. Now always remember at the junction of foregut and midgut, a ring of 6 to 8 tubular structures are present called as hepatic CK or gastric CK, which secretes what? Digestive enzyme into mesenteron and digests what? Carbohydrate, protein, and fat. The gizzard, also known as proventriculus, has what? Outer thick circular muscles and inner 6 highly chitinous plates. This helps in what? Crushing and grinding the food. Mesenteron food complete digestion takes place because this hepatic CK secretes digestive enzyme. Right? Now remember at the junction of midgut and hindgut, 100 to 150 thin yellow colored filamentous structures are present called as Malpighian tubules. And this Malpighian tubules, it helps in excretion. It leads to the hind limb is divided into three parts: ileum, colon, and rectum. Rectum, undigested food comes out through rectum. Note a layer of cuticle lines foregut and midgut, hindgut, absent in midgut. So midgut forms peritrophic membrane around the food. Talking about the respiratory system, it consists of what? Tracheal tubes. So tracheal tubes are supplied with what? Opening of spiracles, 10 pairs, which are regulated by sphincters. The body of cockroaches laterally has 10 pairs of holes in pleurons called as spiracles, leads to network of tracheal tubes. Gases exchange takes place through tracheal tubes by diffusion. Right? 8 spiracles, 2 are present in thorax and 18 present. 10 spiracles are present, 2 are present in thorax and 18 abdomen. Always remember the muscles present between the targa and the sterna is known as turgosternal muscle, and it helps in what? Contraction helps in expiration and relaxation helps in inspiration. Circulatory system, it is open type and it has poorly developed blood vessels. Blood without respiratory pigment, their blood is without respiratory pigment, hence it is colorless, which is known as hemolymph. It flows in a cavity called as hemocoel. Talking about their heart, so in the pericardial space, they has a 13-chambered heart, which is dorsally present, elongated muscular tube, right? And this heart opens on either sides with the help of 12 pairs of ostia, right? 12 pairs of ostia. So this blood from the sinuses is brought to the heart with the help of what? Ostia. And from the heart, it goes out through an anterior aorta. And the visceral organs bath in the blood. The heart is supported to the body walls by alveolar muscles, right? 3 chambers are present in thorax and 10 in abdomen. Blood flows from sinuses, blood from sinuses enters the heart through 12 pairs of ostia. Remember this.
Nervous system of cockroach. मैंने बताया था कि in the nervous system of cockroach they have 9 pairs, few segmentally arranged ganglia, right, on the mid-ventral axis, which spreads out throughout the body. In the head region, a bit of nervous system is also present in the head region, called as supraesophageal ganglia, that act as brain. This is connected by what? Paired connectives. Number of ganglia present are 9, 3 present in thorax and 6 in abdomen. They can live for 1 week even when the head of the cockroach is chopped or removed. Sensory organs are what? Antenna, maxillary pulp, labial pulp, compound eyes, canal circuit. Talking about the excretory system, this shows uricotelic mode of excretion. At the junction of midgut and hindgut, 100 to 150 thin yellow colored filamentous structures are present, called as Malpighian tubules. These Malpighian tubules are lined by what? Ciliated and glandular epithelial cells. And the hemolymph contains metabolic waste called as potassium urate. Is absorbed by what? Malpighian tubule. It goes to hemolymph, and from there it is excreted along with the undigested waste. Extra note point you have to remember: nephrocytes, fat bodies, and uricose glands also helps in excretion. Now the last part is what? Reproductive system. The male reproductive system consists of a pair of testes, which extends between fourth to sixth abdominal segment. From there, it produces sperm. The sperms are carried to a mushroom gland present in the sixth and seventh abdominal segment. The sperms first comes to long tubules. Long tubules forms innermost layer, and short tubules spills nutrition. And this phallic gland produces middle layer, and seminal vesicle forms innermost layer. And then it comes to ejaculatory duct, and from the ejaculatory duct, it is carried to phallomeres. What are phallomeres? These are chitinous asymmetrical structures. That is, on the right side we have right phallomere, and on the ventral side we have ventral phallomere and left phallomere. 3 phallomeres are there, and this stores the sperm. And there's some copulatory organs like titillatory pseudopenis or anal style, right? So this is the structure. Talking about female reproductive system, it consists of what? A pair of ovaries, which extend between 2 to 6 abdominal segment, and each ovaries is made up of 8 ovarioles, and each containing a developing chain of ova. Spermatophores are deposited in spermatheca. Fertilization takes place. Around 14 to 16 fertilized eggs. Collateral gland secretes dark reddish to blackish brown capsule, which forms ootheca, which is 9 to 10, and 9 to 10 such ootheca are produced. Female cockroaches drops this ootheca in damp and humid places near the food source. That is usually around crevices or cracks. They shows indirect development, and they has sporometabolous metamorphosis. This sporometabolous metamorphosis means what? Development takes place through nymphal stage. Unlike larva does not looks like adult, but nymph looks very much like adult. Here, nymph will take 1 year to become adult, and it does 13 times molting. What do you mean by molting? It is periodic shedding of skin cast. The next to last nymphal stage has wing pads. Adult has wings. Right? The cockroaches are of no economic or ecological importance. In fact, they are faced because of smelly excreta. I'm done with the chapter. Now we'll discuss questions one by one. Okay?
इसके क्वेश्चंस बायो हैक में है क्या? कहाँ पे? आमना। Cockroaches are black or brown in color. Class of cockroach insecta dash bright yellow, green, and red colored cockroaches are reported in tropical regions. The size ranges from 1 second. हाँ अभी बोलो। द साइज that's it. रेंजेस का। The size ranges from 1/4 inch to 3 inches. They are no, nocturnal नॉकटर्नल्स, यस। omnivores. हाँ। They live in damp places throughout the world. True. Moist and damp places. Cockroaches are serious pests and vectors of many diseases. ट्रू राइट? हाँ, यस, टेल मी द पार्ट्स। ए इज व्हाट? antennae. B. Compound eyes. सी? C. Thorax. Or D. प्रोथोरैक्स। डी मीसोथोरैक्स। Oh, thorax, राइट? mesothorax. ई मेटाथोरैक्स। ये मेटाथोराक्स नहीं है ना वो लेग के ऊपर वो ना व्हाट इज एफ? मेटाथोरैक्स जी? या लेग्स? जी वाला राइट? लेग है हाँ देखो ना, इसको मान लिया। जाने दो, इतना ही है मेन। एल क्या है बताओ? 4 wings और के? यस, टेल मी कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस व्हाट? पेरिप्लानेटा अमेरिकाना And common species of cockroach. What is the size of Periplaneta americana? 34 to 53 पर यहाँ 34। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा बोलो? 0.6 to 7.6 उन्होंने सेंटीमीटर क्यों दिया पागल जैसा? ऐसा नहीं सवाल पूछेगा। The body is divided into 3 regions, कौन कौन से?
head, thorax, abdomen. ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? प्रिया। आयशा। हेलो आयशा। अयूब। Yes, sir. Tell me answer for 12. The entire body of cockroach is covered with dash Steroids. chitinous exoskeleton. No? Chitinous exoskeleton. What is the color of chitinous exoskeleton? Brown color. Brown, reddish brown. Hardened chitinous plates called as Steroids. they are dorsally क्या कहते हैं उन्हें? Ergoids. Ventrally Sternites. tergites and sternites are joined to each other by thin or thick. Thick and flexible. Thick नहीं, thin. Thin and flexible क्या? Membrane. इसको क्या कहते हैं? Arthroidal membrane. Arthrodial membrane. ए बताओ क्या है, डायग्राम में देखकर बताओ। A is simple eyes. Yes, oscillus. B is what? Compound. C is what? Mouth. Mouth parts है ना? So C is what? Maxilla. Maxilla. Yes or no? D is what? Labrum. Yes. Labrum. ये क्या है? Labium. और ये क्या है? Mandible. ठीक है? What is the shape of head of cockroach? Triangular shape. Head is formed by fusion of how many segments? 1. 6 number of segments ना? 6. हाँ। अरे हेड कितने सेगमेंट से बना इनका? 6 segments. हाँ। The neck is not flexible. ये true है या false? Embryological state. Neck is not flexible. False. False. Head capsule bears a pair of dash eyes. Compound. A pair of thread-like antenna arises from membranous sockets lying behind the eyes. ये statement सही है गलत है? False. क्यों false? ये एनसीईआरटी का लाइन है। Behind. Behind it. ट्रू है शायद, चेक करना पड़ेगा। एंटीना हेल्प इन व्हाट? Monitoring the surrounding environment. Tell me what type of mouth do they have? Hypogonadous. Biting and chewing type ना, मेन तो ये आंसर है। Biting and chewing type. अपर लिप को क्या कहते हैं? Upper lip. Labrum. लोअर लिप? Labium. माउथ पार्ट्स के नाम बताओ। Maxilla. Mandible. Labrum. Labium. ठीक है।
ठीक, नेक्स्ट ध्रुवा। ए वाला लैब्रम है, हम्म, बी वाला मैंडिबल है, सी किधर? ठीक अच्छा है। सी, अरे ये तो ये हाइपोफेरिंग्स है, टंग है ना हाइपोफेरिंग। ठीक, हाँ ठीक है। डी मैक्सिला, ई लेबियम सर। ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ टंग को क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंग्स। नेक 3 पार्ट्स ऑफ थोरैक्स आर व्हाट? सबसे पहले ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। नेक इज द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ? प्रोथोरैक्स। वेरी गुड। ईच thoracic segment bears a pair of walking legs, ये सही है? ये सही है ना? ट्रू है। हाँ, हर पैर से, हर सेगमेंट से हाँ वो एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग निकलते हैं, हाँ ट्रू है। प्रो 4 विंग्स कहाँ से निकलेंगे? मीजोथोरैक्स से निकलेंगे, वेरी गुड। और सेकंड पेयर अराइजेस फ्रॉम? मेटाथोरैक्स से निकलेंगे। 4 विंग्स को और क्या कहते हैं? लेगमिना, और दूसरा वाला याद नहीं आ रहा मेरे को, एलन वाला। एलाइगा। हाँ 4 विंग्स ओपेक या ट्रांसपेरेंट? फोर विंग्स ओपेक होते हैं, और ये डार्क होते हैं, और लेदरी होते हैं ना। हाइंड विंग, हाँ, हाइंड विंग्स कवर द 4 विंग्स एट रेस्ट, ट्रू और फॉल्स? नहीं, फोर विंग्स कवर करते हैं हैंड विंग्स को। यस। हाइंड विंग्स के फीचर्स बताओ। हैंड विंग्स के फीचर्स, अच्छा वो डिस्टिंग्विश वाला। हाँ, हाँ, हैंड विंग्स मेम्ब्रेनस होता ट्रांसपेरेंट। है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है। हाँ, यस। and used for flight. Dash wings are used for flight. हैंड विंग्स 2 pairs of wings are present at dash and dash segments. से क्या चाहिए, से सेकेंड और थर्ड। Mesothorax and metathorax. Yes or no? अच्छा है। Abdomen. हाँ ना, 2 pairs of wings arises present at ठीक है, बुक में पता नहीं मैंने क्या याद किया। abdomen of cockroach is divided on how many segments? 10 सेगमेंट्स। Very good. Which segment is boat shaped? सेवेंथ वाला। ठीक है. Genital pouch is formed by dash and dash and dash सेवेंथ, sternum. एट और नाइन्थ वाला स्टर्ना। Genital pouch को और क्या कहते हैं? क्या था वो, ब्रूड पाउच। Next. मेरे को पूछ रहे हो? नहीं, next कौन है? हफ्सा. बोलू? हाँ, ठीक है। 45 seconds. इंटीरियर पार्ट, तो इसमें ये इंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पार्ट में फीमेल का बताऊं कि मेल का बताऊं? फीमेल का ही चल रहा है ना ऊपर, सब तो फीमेल का ही बताना है. ठीक है, तो फिर अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका होता है, फीमेल Yes. ये फीमेल गोनोस्पोर, और फिर को एक पेयर होता है कोलैटरल ग्लैंड्स का। Very good. In male मेल genital pouch जेनाइटल lie at 4 या hind end, कौन सा end में होता है? फोर, नहीं, hind end ना, पीछे. hind end of abdominal bounded dorsally to ninth and 10th 9th and terga, 10th terga. और ventrally ninth sterna। Male genital pouch में क्या क्या होता है? मेल गोनोस्पोर होता है, एनल स्टाइल होता है, और गोनोपोफाइसिस होता है, Very good. और Anal फिर style उसके बाद ये फॉल्स। anal cerca है सेकेंड फॉल्स। jointed filamentous structures are. जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये क्या सवाल है? फल जॉइंटेड, वही anal cerca है. ठीक है। Dash segment of cockroach bears anal cerca है. 10th segment। Anal style is also called Anal style is also called वो copulatory organ। caudal style ना. हाँ, वो copulatory organ है, बट और क्या कहते हैं उसको? caudal caudal style. ठीक है. मेल का genital pouch, ये क्या पूछ रहा है भाई, वापस क्यों पूछ रहे हैं, पागल है क्या थोड़ा?
ये बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री पार्ट्स को लेबल करो। ए क्या है? ए है माउथ, बी? बी है ये क्या बोलते हैं पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, वेरी गुड। सी सी? है वो सलाइवरी रिसर्वर है, फिर डी? डी है फेरिंग, फिर उसके बाद ई है ये क्या डी बोलते हैं इसे ईसोफेगस है, क्रॉप। ईसोफेगस। अच्छा सॉरी सॉरी हाँ। सॉरी, ईसोफेगस, फिर ये उसके बाद क्रॉप है, जी? फिर एफ में वो गिजार्ड, जी ये है वो रिंग्स 6 to 8 रिंग्स बनाते हैं, हेपाटिक सीशिया है, वेरी गुड। और फिर उसके बाद एच? गैस्ट्रिक सीशिया भी बोलते हैं, एफ गिजार्ड है, एच है ये पूरा, ये एच का पूरा बताना है, मिडगर्ड है मतलब मीसेंटेरॉन। हाँ, मिडगट और मेसेंटेरॉन है। आई है? और फिर आई है 100 to 150 ये मार्सिडियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो, फिर ठीक है है। इलियम, हम्म। इलियम कोलॉन और रेक्टम। वेरी गुड। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? सहल? यस सर। 55 का आंसर बताओ। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इन 3 रीजन्स, नेमली। सहल? कोलगट, मिडगट, इनगट। सॉरी सर, ठीक। माइक नहीं सर। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर पैसेज, ईसोफेगस। ये स्टेटमेंट सही है क्या? फॉल्स है सर। क्यों? क्योंकि वो किसमें खुलता है? ट्यूबुलर। फेरिंग्स में। ईसोफेगस opens into what? क्रॉप। हाँ, and crop is used for what? फुल स्टोरी। Very good. Crop opens into प्रोवेंटिकुलस। gizzard. Gizzard is also known as, हाँ तो सर गिजार्ड इज आल्सो नोन प्रोवेंटिकुलस। हाँ, gizzard have outer layer of thick या thin? थिक। Thick. सर्कुलर, सर्कुलर मसल्स। हाँ, gizzard have inner thick या thin? थिक थिक। Thin. Cuticle forming 6 number of highly chitinous plates, जिसको क्या कहते हैं? Teeth. टीथ। हाँ This chitinous plates helps in grinding the food. Entire foregut is lined by cuticle. ये statement सही है या false है? सर सही है। Hepatic CK are also called gastric CK. सही है? सर यस सर। Number of gastric CK present in cockroaches are? 6 to 8। Hepatic CK are present at the junction of? कोलगट एंड मिडगट। ठीक है. Hepatic CK function is what? डाइजेस्ट जूस secreted। हाँ. Yellow colored malpighian tubules are dash in numbers. 100 to 150। Between midgut and hindgut are dash colored. कौन सा color? येलो। Thick या thin? थिन। Filamentous structures जिसको क्या कहते हैं? Malpighian tubules. Malpighian tubules helps in removal of excretory products from what? हेमोलिन। ठीक है. Correct. Next. Tazeen. हाँ सर। Tell me hindgut is हाँ चलिए। differentiated into what 3 parts? ये इलियम कोलॉन और रेक्टम, रेक्टम। Describe the path of flow of food from mouth to anus. All the parts. हाँ तो सबसे पहले आता है अपना ये माउथ, फिर टिब्यूलर फेरिंग्स, फिर हम्म. इसोफेगस, फिर ये क्रॉप, फिर गिजार्ड, गिजार्ड के बाद ये
वो माल्फिजन टिब्यूल्स, फिर उसके बाद मिडगट प्रेजेंटरॉन, फिर नहीं, माल्फिजन टिब्यूल में हेपाटिक्स है, फिर मिडगट, माल्फिजन टिब्यूल्स, इनगट में इलियम, कोलन, रेक्टम और Yes. एनस। A pair of dash present crop के पास। ये क्या सवाल? अपेरो, एक मिनट रुको, अपेरो क्रॉप के पास क्या है? तो आपके पास हाँ, तो कुछ भी लिखा है भाई, फालतू है। सलाइवरी ग्लैंड, नहीं, क्रॉप के पास थोड़ी ना होता है, वो फेरिंग्स के पास होता है। फेरिंग्स के पास मतलब आजू बाजू तो हाँ, नहीं तो क्रॉप कितना दूर है उससे? इसोफेगस के बाद है क्रॉप। ये सवाल ही हाँ, बकवास है। एक बार आइडेंटिफाई द देखो पार्ट्स ना ऑफ। इसका आंसर। 74 ना, कितना सारा सवाल है। Salivary देखा सर। glands given in NCERT summary। ये नोट करेंगे, ठीक है। हाँ 74। फटाफट आंसर्स बताओ, हाँ, खत्म करते हैं। हाँ, फिर एक से प्रणाली आइडेंटिफाई बची, द, ये दिख नहीं रहा है। दिख ही नहीं रहा है। बताओ ये क्या है? मैं मार्क कर रहा हूँ, आप बताना, ठीक है। ये क्या है बोलो? ये चेम्बर ऑफ हार्ट है। एंटीरियर होता है। अच्छा, ये क्या है? ये एलरी मसल्स है। ठीक है। और ये छेद क्या है यहाँ पे? ऑस्टिया, हाँ वही है, अच्छे से लेबल नहीं किया। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज डैश टाइप। ये ओपन, ब्लड ब्लड वेसल्स वेसल्स ओपन is called as। ये हीमोसील, hemolymph consist of। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। yes। heart consists of an elongated muscular tube, सही है। फॉल्स है, चेम्बर्स होंगे। हाँ बट वो चेम्बर्स इलोंगेटेड है ना, लंबे है ना। अभी तो पढ़ा है हाँ इलोंगेटेड। हाँ हाँ, ठीक है। ट्रू। हार्ट लाइज मिड along डॉर्सल लाइन। mid dorsal line, correct। heart is differentiated into dash shaped chambers। dash shaped chambers। कौन शेप? हाँ कौन shaped है ये? on with dash on विथ both sides। एलरी मसल्स, नहीं, अच्छा with ऑस्टिया। blood from dash enters heart through। ब्लड फ्रॉम डैश एंटर्स हार्ट थ्रू, कहाँ से ब्लड आता है? ब्लड साइनस फ्लो, साइनसेस थ्रू। एंटर हार्ट। assume ब्लड क्या? फ्रॉम साइनसेस, through एक ostia। मिनट, हाँ ऑस्टिया, सॉरी सॉरी। blood is pumped Blood posteriorly is pumped again posteriorly to sinuses again. through a। Anteriorly pump होता है aorta हाँ, से, तो false होगा। अच्छा पोस्टेरियरली Respiratory बोला है, हाँ। system false। consists of a network of spiracles. हाँ, spiracles। number of spiracles। 10 pairs है, मतलब 20. हाँ, spiracles are present medial या फिर lateral side of body। Lateral very good। number of, अच्छा ये हो गया। dash carry oxygen from air to dash lungs। tracheal tube. very good। exchange of gases at tracheoles Exchange takes place by। diffusion. correct। spiracles openings are Spiracles regulated regulated, is regulated by and regulated by ये sphincters. excretion done by four things। कौन कौन सी चीजों से excretion? हाँ, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड और क्या fat था? body। हाँ, फैट बॉडीज। malpighian tubule is lined by। माल्फिजियन ग्लैंडुलर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। cockroaches यूरिको या। कॉकरोचेस यूरिकोटेलिक। ठीक है। माल malpighian tubule absorbs dash and convert them into। माल्फिजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब, माल्फिजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब ये, हाँ, KHCO3 एंड कन्वर्ट देम इनटू, नहीं, पोटेशियम यूरेट ना। यही तो होता है ना, कन्वर्ट देम इनटू। यूरिक एसिड, हाँ, यूरिक एसिड एंड एक्सक्रीट थ्रू हेमोलिम्फ, वो बाहर चला जाता है ब्लड में।
Each segment of cockroach have its own ganglia. सही है गलत है? Each segment of हर सेगमेंट में नहीं है, सिर्फ नहीं नॉन होता है ना, हर सेगमेंट में होता है, सिर्फ 9 सेगमेंट का होता ganglia are joined by है। लैटरल नर्व्स और ये वेंट्रल साइड। number of ganglia in abdomen, 6 thorax नहीं 9 9 6 हाँ, और थोरेक्स में 3। 6 3 Head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the dorsal part. ये false होगा ना, ventral part है। ventral है। When head of cockroach is cut, it still lives ये for false है, 1 week के लिए होता 1 week होता है। The brain is represented by है। what? supra esophageal ganglia, ठीक है। anal cerci is a sense, हाँ सही है। Maxillary pulp and labial pulps are vestigial organs of cockroach. false, Sensory function है। Supraesophageal ganglia supplies nerves to eyes eyes and antenna. और हाँ antenna करता है। The compound eyes are situated in the ventral or dorsal surface of head. compound eyes ventral, Each eye consists of dash number of hexagonal hematoria. 2000 With the help of several hematoria, can receive several images of an object. हाँ true। False. True. Cockroaches have dash type of vision in which there is ये mosaic vision. mosaic type of image where it has more sensitivity and less resolution. Mosaic vision is vision common during day or night. night and hence for nocturnal. Name 5 sense organ of cockroach. Antenna, compound eyes, ये max वो sensory part, anal style और anal circle. Testes lie on medial or lateral side. Testes lie on the lateral side. Between what segments? 1 minute. Second, fourth और sixth. Ovary second to sixth है ना? Name the structures ovary that second sperm to passes through its journey from testis to outside. हाँ, ये सबसे पहले टेस्टिस, फिर आता है वो ऐसा क्या होता है वो? Vast difference. अरे 1 मिनट रुको, मुझे याद नहीं है। भूल Vast गई। difference ना तजीन. हाँ हाँ, देखो टेस्टिस, फिर वास डेफरेंस, फिर वो बिडर्स कनाल के थ्रू जाता है ना? यही है ना? हाँ। फिर अरे उसके आगे का विडर्स कैनल कहाँ से आएगा तजीन इसमें? नहीं, देखो बिडर्स कनाल तो फ्रॉग में था सिर्फ। फिर 1 मिनट, टेस्टिस, वास डेफरेंस, फिर लॉन्ग ट्यूब्यूल, नहीं सही है। लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल. फिर वो फैलोमियर्स में जाएगा, सेमाइनल फिर वेसिकल मशरूम फिर ग्लैंड। टेलोमियर. हाँ, सेमाइनल वेसिकल फिर फैलोमियर में स्टोर हो जाता है। A characteristic what shaped gland? A characteristic mushroom shaped gland उसके बाद is present in the ये रुको 7th to 6th abdominal segment, 6th to 7th abdomen. आगे The external genitalia are represented by ये titillator, pseudopenis और फेलोमियर, इसमें 2 ही क्यों है। पानी. Telomere are made up of chitinous material. हाँ, Telomeres are symmetrical या asymmetrical? asymmetrical structure. Sperms are stored in telomeres. Sperms are glued Sperms are together glued together bundles in called the form spermatophores. Ovaries lie laterally in the 2nd to 6th abdominal segment. yes. Each Each ovary ovary is made up of 8 ovarioles. ovarioles are also called उठिका नहीं, ova, nine. developing chain of ova. ये कुछ भी लिखा है नहीं, ये सवाल ही नहीं है.
Next, ovules consist of a chain of हाँ ये ट्रू है, true है. oviduct unite to form dash. Oviduct unite to form dash which opens into. Common oviduct ना? क्या? Oviduct unite to form common oviduct or vagina, which opens हाँ, और which opens into collateral glands. collateral gland नहीं बोलेंगे, gonapophysis बोलेंगे. ठीक है. हाँ. फीमेल, ये तो लेबलिंग छोड़ दो, जाने दो. डायरेक्ट यहाँ से बोलो 126 बोलो. Spermatheca are present in females. हाँ ट्रू. They are present in that segment. Spermatheca कौन से segment में होता है? Spermatheca कौन सी segment? Six. ये 7th segment. Sorry, 7. And opens into what? Gonapophysis. Spermatheca opens into gonapophysis. Sperms are transferred Sperms to are dash. transferred to spermatheca. नहीं, फिर copulatory organs में भी. ऐसा अजीब सा सवाल है. चेक करना इसका आंसर. हाँ. स्पर्मेटोफोर्स. अच्छा हाँ, स्पर्मेटोफोर्स के फॉर्म में ना स्टोर होता है ऐसे. अच्छा ऐसे. फॉर्म बोलना चाहिए, कुछ भी बोलते हैं लोग. Fertilized are encased in capsules called ऊथिका. ootheca. Color ऊथिका का कलर ब्राउनिश होता है, ब्राउन, डार्क blackish ब्राउन. or red. Yes or no? अच्छा. लेंथ. लेंथ इसका बताया नहीं है ना शायद मैंने आप लोग को. नहीं. इसका है ना 1/8 इंचेस है. 1/8 इंचेस. ये मेरे को याद दिलाना ना, 1/8. हाँ 1/8 इंडेक्स. हाँ ठीक है. ठीक है. 1/8 इंचेस का मतलब ही होता है 8 mm. मतलब हाँ दोनों है. 1/8 इंचेस भी है और 8 mm भी है. ये मुझे 8 याद mm. दिलाना ना कल लिखाने के लिए. ठीक है. Utica dropped or glued usually in a place with crevices and near a food source. On an average, females produce On dash. average, female produce 9 to 10 Utica, each containing 14 to 16 number of eggs. हाँ. Function of collateral glands. फिर कोलेटरल ग्लैंड्स का काम क्या है? टू फॉर्म कैप्सूल ऑफ ऊथिका ना. हाँ हाँ बराबर. डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना इज. Fora metabolus. एंड पोरोमेटाबुलस मींस. मतलब कि वो निम्फल स्टेज होता है उसमें. हाँ. The nymph looks very much like adults. True or false? True. The nymph grows by molting how many times? 13 times. The next to last nymphal stage Next. has Wing pads. Wings नहीं होता, wing pads. cockroaches don't transmit bacterial diseases. False. Cockroaches spoil food and contaminate with True. their head lies at right angles to longitudinal body axis. Longitudinal body axis. Gonapophysis. False. False. Females में होता है. Midgut is also called. Midgut is also mesenteron. Number of Ellery muscles are Number of 13. and chambers. 13. Done. So we'll stop for today.